दो जगह है, तो दो ब्रांचेस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है, इट हैज टू बी शेयर्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कोई बाहर नहीं भेजी जाती है। और सर्कुलर एक इम्पॉर्टेंट लेटर है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जो कि 1 to 1 बाय हैंड ये पहुंचाई जाती है हर डिपार्टमेंट में, और लोग उसको पढ़ करके और साइन करते हैं एज अ रिजल्ट टू टेल द पर्सन जो भेजे हैं कि वी हैव रेड द लेटर, पढ़ लिया है हमने, उसका हम सिग्नेचर कर देते हैं। यस मैम। एक सर्कुलर आता है तो आप उसको पढ़ते हैं और आप उसको साइन करके, और वो फाइल वापस पूरे डिपार्टमेंट में वो सर्कुलर घुमाया जाता है। यस मैम, स्कूलिंग के टाइम पे मैम था ऐसा, स्कूल के टाइम पे था, इसलिए कि और वो अब उतना उसका उतनी मायने नहीं रह गई, अब तो व्हाट्सएप में सब काम होता रहता है। अदरवाइज तो पहले जानते हैं व्हाट इज द सर्कुलर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड नोटिस, सर्कुलर एंड मेमो में क्या फर्क है, ये सब चीजें जानेंगे आज हम। तो सर्कुलर क्या है? तो सर्कुलर इज an official letter which is shared within the organization. With official letter shared within the organization, and it is not sent by mail or not sent by post, but it is sent by a person who will come to you and you will read the letter and you will sign it. Something of importance. जैसे कोई इमरजेंसी छुट्टी हो रही है या संडे वर्किंग है तो सर्कुलर आता है। यस मैम, टीचर्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं, साइन करते हैं, बच्चों के और साइन इन्फॉर्म करते हैं, बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं और यस मैम आगे बढ़ जाती है बात, आगे बढ़ जाते हैं। वो जो लाते हैं फिर वो अगली क्लास में जाते हैं, वो अगली क्लास में ले जाते हैं, उसको लेके आपको रखना नहीं है। ये दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉमन, क्योंकि नोटिस बोर्ड में और इसमें क्या फर्क है? नोटिस में क्या है? नोटिस होता है बाहर से भी आता है और अंदर से भी आता है, और नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है। इसमें एक जगह लिख दिया जाता है, बाकी लोग हाँ, बट सर्कुलर में सैल्यूटेशन होता है, डियर ऑल करके होता है, और अगर सिर्फ आईटी के लिए है तो ऑल आईटी मैनेजमेंट के लिए है तो मैनेजमेंट। सो दिस इज स्पेसिफाइड कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। So I will show you something which is solved. आप देखेंगे सर्कुलर क्या चीज। So circular, what actually is a circular? The circular is essentially a letter containing some important information. So it has a letter which has some important information. Please write down the definition if you want to. So a circular is a letter containing some important information that is distributed to a large number of people. Say, for example, you have to invite an entire department for a meeting. What will you do? Or update the dress policy of the whole office, or a circular will be the best mode of communication for these purposes. Anything which is of importance can be shared with a whole group through a circular. Additionally, circulars also find used in advertising tools. They can contain marketing information and have a wide distribution range, be it for interdepartmental communication, advertising, even personal reasons. A circular must always reach a large number of correspondents, and this is one of its main features. So one of the main features क्या है? It should reach a whole lot of people. या जो persons who are concerned. Like maybe the entire management department or the entire IT department, it all depends. So what are the advantages of a circular? So definition क्या है? Circular is an official letter which is of importance and shared to a large number of people to convey some important news, be it
a meeting for a holiday or Sunday working. It can be something of importance, like a change of address, change of timing, whatever. Or circulars can be for online classes. And from a certain date, all the students will be attending online classes, but all the teachers are supposed to come to either Patliputra or Boyinward branch. So there was a circular when certain faculties were supposed to be at Patliputra or MWF, and the same faculty will be in Boyinward on TTS. So these are the important things which is shared in a circular. So what are the advantages of a circular? क्या advantages है? क्या फायदे हैं उसके? So number one, it is very simple and effective way of communication. Since it is precise and written, very little chances of miscommunication. जो कुछ लिखित हो जाता है, written हो जाता है, तो miscommunication का सवाल ही नहीं है. कोई confusion का सवाल नहीं, कोई doubt का सवाल नहीं. Everything is in black and white. So when you see something written, documented, there is no confusion. So it is, and of course, in business communication, you all know that simplicity is the main word. The buzzword is simplicity. If you cannot be simple in your words, then this is not business communication. So write it simply. It is very simple and effective way of communication. And since it is precise, इसलिए कि precise बहुत लंबा नहीं होता है, precise होता है, and it is written. Oral तो आप भूल भी जाएंगे, या सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. बहुत लोग ऑफ माइंडेड होते हैं, सुन के भी नहीं समझते हैं, बहुत लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं, तो वो सब गुंजाइश इसमें है नहीं, because it is something which is written. Everybody who reads it will understand. And the proof is that I have read and I have signed it. अगर आपने साइन नहीं किया, बिना पढ़े आपने साइन किया है, तो वो भी आपको that is also very unethical कि आपने कुछ साइन कर दिया, सब लोग साइन करे तो हम भी साइन कर. तो नहीं, you read it and then you sign it. So there is very little chance of miscommunication. कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई barrier नहीं हो सकता इसमें. There is no hurdle, there is no barrier, there is no confusion, there is no miscommunication, there is no misconception, there is no non-comprehension. कुछ नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है, because simply written, precisely written, and the word written says a lot of things. The second point, it is also quite inexpensive. You do not need a super quality paper because it is all shared in within the organization. तो उसके लिए बहुत आपको top quality paper नहीं जरूरत होती है. Whatever material is available, or usually it is done in a register. और register में लिख करके, और एक register maintained होता है circulars का. In offices it happens. Otherwise, today people are using paper. So these circulars are inexpensive and it is cost-effective way of communication. बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, कुछ पैसे खर्च नहीं करने, तो आप क्वालिटी पेपर नहीं लगाना, बस जो अवेलेबल मटेरियल है उसमें आपको लिखना है. So it is very inexpensive and a cost-effective way of communication. Third, circulars are also a time-saving method. If you want to convey something, you will write an agenda, and then you will call up people, and then they will assemble, and then you're wasting a lot of time. Circulars are an easy way. Supposing I am sitting here in the lab in the Patliputra branch, and I want to convey something to the entire branch of Patliputra. What will I do? I will just jot down some points. I will just bullet some points, and then I will ask the person to please, जिसके पास जा रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबने साइन करा दो. ठीक है, मेरा काम खत्म हो जाता है. I think very quickly. और by the time वो सबसे साइन करा के आ जाता है, अगर 20 people are there in the office, the 20 people will read a short message and sign. It hardly takes half an hour. So lot of word, lot of time we are saving when we are using circulars. समय बचता है. So it reaches a large number of people in very limited time and effort. Effort तो कुछ लगा ही नहीं, बस लिखने वाला का effort लगा, पढ़ने वाला पढ़ेंगे, और then they'll sign it.
Lastly, they are great advertising and marketing tools as well. They can help create a new market, educate people about product or services, and also increase the consumers' confidence in the company and the product. Now, this is about marketing also. You can send a letter of marketing and advertising. So in very short time, your word can travel far and wide. Right? Understood? Please note down the points of what circular is and what are the advantages of a circular. I'm going to ask you right away. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Definition लिख लिया? Yes, ma'am. Definition, advantages. Now this is solved. Circular number अगर formatting कैसे करना होता है? Excuse me, ma'am. Hello? Formatting समझ लीजिए उसका and start writing a मैम circular. अगर डिफरेंशिएट करने का आ जाए सर्कुलर एजेंडा मेमो हाँ बिल्कुल 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 तो इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे या ऐसे कॉलम वाइज लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे जैसा आप देख रहे हैं सामने ना सर्कुलर ऐसे लिखेंगे ऐसे डेफिनेशन अलग अलग ना चारों तो का मैम वो पूछ रहा है कि मतलब मैम अगर डिफरेंशिएट करना होगा तीन में सर्कुलर मेमो एजेंडा में तो मैम कॉलम बना के लिखेंगे या फिर तीनों का अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे? अलग अलग डेफिनेशन दोगे. ओके मैम ठीक है देखिए differences between memo and agenda and differences between agenda and minutes of the meeting. आपको आ सकता है differences between a notice and a circular. ठीक है तो circular number हाँ हेलो नोटिस एंड notice and circular. ओके So circular number and this is the inside correspondence, official correspondence and within the organization circulars आता है. तो पहले क्या लिखेंगे? Circular number लिखेंगे. I told you it is also always maintained in a register or something. या पेपर पर भी तो सर्कुलर नंबर होता है आपका. अगर आपके कंपनी का आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला सर्कुलर है तो 01 राइट साइड यू विल राइट द डेट and then you will write revised working hours. जैसा अभी हम लोग को revised working hours on the lot of classes scheduled now और आप लोगों को right from 8 to 6 class करना पड़ रहा है तो then revising the working hours. So all employees of XYZ company. There is no salutation or something. Dear sir, dear ma'am, कुछ नहीं. Heading क्या देंगे हम लोग? Circular number, date, right side, and subject, which is something very important. Whatever it is, you write down revised working hours. All employees of, and then you start from the left side, block style approach. All employees of XYZ company, right? And this is the circular. This is to inform all employees that there will be a change in the working hours of the organization effective immediately. Or with immediate effect. As you know, we do not function on any Saturdays since last month. So we have 5 working days in a week. A revision in the working hours was necessary to ensure the quality of work does not suffer. Hence, 1 hour will be added to the previous 9 hours work days. The revised working hours will be as follows. Then the bulleted points. Working days, Mondays to Friday except holidays, and working hours 8:30 to 6:30 p.m. These hours will include the 1 hour lunch break. आप इसको प्लीज लिख लें ताकि आप समझ जाएं किस तरह से लिखा जाता है. And this is the most common circular जो ऑफिस में आता है.
change of address, change of working hours, revised working hours, or and then all employees are requested to note these new and revised timings. The timings are effective immediately from 26th of October 28. You write the present date. From 12th of January 2022. Punctuality and adherence to the new timings are requested. Repeated defaulters will face actions. Please contact the HR department for your managers for any queries you may have. Please. He is the CEO of the company. ABC, Mr. Karan Malhotra, CEO of XYZ company. अच्छा, you are bringing up these topics कि ये करा दीजिए वो करा. This is something which I really appreciate. कि आप coming out to know something. बहुत अच्छी बात. नहीं तो कुछ जानेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, तो what is the fun of attending classes? Students, please write down this circular. And on the basis of this circular, you can write down other circulars of anything which you want. Tell me if you are finished. Did you understand? Please respond. Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. नोट कर रहे हैं. नोट कर लीजिए इसको. तो क्लियर हुआ आपका सर्कुलर का? कुमार क्या नाम था? शशि कुमार. Yes, yes, ma'am. मैम टाइप्स ऑफ रिज्यूमे भी बता दीजिएगा. टाइप ऑफ रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे तो Yes, बहुत रेज्यूमे तो बनाया आप लोगों ने ना. Yes, मैम बना है. बनाए दिखाइएगा हमको. और रेज्यूमे मेकिंग भी बहुत अच्छी हमको देखना भी है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा आप लोगों ने रेज्यूमे में? यू अंडरस्टूड सर्कुलर हाउ टू राइट? फॉर्मेटिंग समझ गए? Yes, sir. मैम डिस्टिंग्विश क्या होता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश कहाँ पढ़ रहे हैं आप? डिस्टिंग्विश डेट बताना. Distinguish between a circular and a notice. मैम डिस्टिंग्विश विद some pair of word दिया है उसमें previous questions में. Yes मैम. हाँ, कौन सा confusing words होगा? Yes मैम, मैं सेट करके आती हूँ. हाँ, what were the words? And since set the permission दीजिए लगा. Differentiate between advice and advice. Skip and skip. क्या है? What are the pair of words? Bazaar and bazaar. Distinguish between bazaar and bazaar. Yes मैम. है ना? मतलब दोनों में फर्क बताइए. And previous year questions दिखाएंगे तो it will be easy for you to understand and revise.
आपका भी क्लास है क्या 11 बजे से? Yes, ma'am. कौन सा क्लास है? मैथ्स का? मैम सैड हेलो, have you finished? मैम स्क्रॉल कीजिएगा मैम ऊपर की तरफ से। Advantages. यस मैम। Definition, advantages and solved. Sample of circular. So technical communication and mathematics are very similar. You have to practice. Finished? यस मैम। Okay. True or false? Fill in the blanks. Circular dashes the efforts to be taken of management and considerably. Reduce करता है कि increase करता है? रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मैम Reduce करता है. So true and false. It can be in MCQs also. The correct answer is A. Circulars are very cost-effective method of communication. They also require limited time and effort, so they reduce the efforts of the management. They can reach a huge number of people of correspondence in minimum time and effort. Thus, this concludes our discussion on the given topic, which is circular. Understood? यस मैम आपको पता है ना कि बिल्कुल मैथ की तरह इसको बिजनेस इंग्लिश भी करने का होता है. एक बार समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे इसको. एक बार मेथड फॉर्मूला समझ गए तो मैथ बना लेते हैं आप. एक बार फॉर्मेट से समझ गए मेमो का क्या है, डिफरेंट है, सर्कुलर डिफरेंट है, एजेंडा डिफरेंट है. So this has to be learned, and you will be learning only by doing it.
All right, it is good that the class was resumed. Otherwise, I thought आपको कोई revision करने की जरूरत ही नहीं. अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इस टॉपिक को उठा लिया और एक की वजह से सबका काम बन गया. Okay then.